This is Anurag, your host on this channel, and I have done a 1-year MBA from IIM Ahmedabad, the PGPX program for the year 2014-15. उसके बारे में एक वीडियो है जो YouTube में काफी एक इंटरव्यू का वीडियो है, काफी वायरल है, 14 लाख व्यूज है. So because of this, lot of people keep approaching me कि सर ये 1 year का MBA ये चीज क्या है, वर्थ है क्या करने का. I have created these separate videos on the 2-year MBA versus the 1-year MBA. But मोटा मोटी अगर आप समझें तो what is the 1-year MBA and who are the people for whom it will be most beneficial? It is beneficial for people who have like 5 years of work ex in case you are opting it from an IIM Ahmedabad, Bangalore or Calcutta, or even lesser experience like 2 to 3 years in case you are opting for an ISB or going abroad. So a lot of people go to IE Business School in Spain, or they go for the 2-year Harvard Business School. So 2-year Harvard Business School will not come here because in US typically MBA will be for 2 years. European schools जैसे IE Business School है और INSEAD है, it's the 1-year course. So what happens here is that from 2 to 5 years to 10 years of work ex under your belt, you now want a management degree because आप एक function में expert बन चुके हैं. So typically आप एक IT में तो आप delivery में काफी अच्छे हो चुके हैं, आप एक chartered accountant है तो you would have been a very good costing, MIS, corporate accounts analyst. So MBA makes a lot of sense because it gives you a broad view into the whole business world. Now इसमें अगर 3-4 dimensions में आपने बात करें, so number 1 cost. एक typical मारवाड़ी perspective से भाई मेरा खर्चो कितना आ रहा है और मेरे कमाई कितनी है. ISB हैदराबाद का 1-year MBA cost 36 lakh rupees plus 1 year of salary foregone. So let's say if you are at a salary of 20 lakhs, so this 1-year MBA will cost you 36 lakhs plus 1 year of interest because interest starts counting from the day you are there. So it typically becomes something like a 60 lakh rupees. आप एक साल में वहां पे खाओगे पियोगे भी, plus आप अपने होम टाउन ट्रैवल करोगे, your people will travel. So you should have a good corpus in some way. But yes, you will get a collateral free loan. मतलब आपको कोई घर गिरवी नहीं रखना है वो लोन लेके. So you will get it at a SBI का जो MCLR है उस पे ऑलमोस्ट मिल जाएगा, मान लीजिए 25 बिप्स ज्यादा होके भी. So in terms of ROI एक बहुत बड़ा झटका लगता है because you know in return in the short term you will feel कि अरे मेरे को किताब पकड़ा दिया दुनिया भर का. So that is what happened in April 2015. I was like shell shocked कि भाई मैंने इतना पैसा खर्चा कर दिया, नौकरी छोड़ दी, बदले में मेरे को इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग और ऑपरेशंस मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी किताबें मिल गई और मैं एक स्टूडेंट बन के क्लासरूम में बैग लटका के जाता था, प्रोफेसर पढ़ाते थे, मैं एग्जाम देता था, ग्रेड्स आते थे एंड एक बेल कर्व बन जाता था. सो फॉर मेनी इट माइट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, बट लेट्स से आप रिसेंटली थोड़े से पैसा आपके पास हुआ और फिर इस MBA करने के बाद आपकी नेटवर्थ 0 हो गई, तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर. सो दैट इज द नंबर 1 थिंग. इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, so अगर आपका डेल्टा 30% भी हो जाता है फ्रॉम योर प्री MBA टू पोस्ट MBA सैलरी, तो आपका 5-6 years में आराम से ROI आ जाएगा. इनफैक्ट द पेबैक विल बी इवन लेसर फॉर पीपल. सो आई हैव फ्रेंड्स हु मूव फ्रॉम 17 lakhs pre PGPX to 55 lakhs post PGPX. There are people who would have been in a Deloitte or a KPMG at 10 to 12 lakhs, went to Europe. यूरोप में और ज्यादा पैसा लगता है, बट when they came back to India, so they're working in EY Parthenon for 50 lakhs plus kind of salaries. I got friends who were CA freshers, worked in a Goldman Sachs for 9 to 10 lakhs and then went to a Yes Bank investment banking after an ISB or joined a McKinsey. So salary wise it all depends on कि उस B स्कूल के बेल कर्व में आप कहाँ बैठते हो और आपका प्लेसमेंट कैसा लगता है. So ROI उसके ऊपर डिपेंड करता है. In terms of the experience, I can say that it is phenomenal. As compared to a 2-year program, 1 year में the advantage that is there is that you have a lot of work ex. And in case you got work ex which is like into some sort of a managerial role, तो आप दुनिया देखे हो and then you see that in form of case studies in the classroom. Now you explore the whole world. So in a typical 1-year MBA, you do 300 to 400 case studies. You will be able to apply a lot of learnings. तो वो जो लर्निंग है ना वो बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड हो जाती है. योर एबिलिटी टू थिंक इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फैशन, वर्किंग इन एन अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, बिकॉज अ लॉट ऑफ केस स्टडीज विल हैव डेटा विच इज नॉट इनफ फॉर डिसीजन मेकिंग. फिर आप assumptions लेते हो तो यू
काइंड ऑफ जो एक रियल लाइफ का डिसीजन मेकिंग सिनेरियो होता है एक बोर्ड रूम में, वेयर यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट द वर्ल्ड कि एग्जैक्टली क्या होगा. तो फॉर एग्जांपल कोल डिमांड इन इंडिया बढ़ेगा कि स्टेगनेंट रहेगा कि डिक्लाइन करेगा, एंड देन यू हैव टू टेक डिसीजंस अंडर दैट. तो उस एनवायरनमेंट में वर्क करना के लिए आपका डिसीजन मेकिंग का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाता है. यू काइंड ऑफ अटैक प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड कि उसका ड्राइवर्स क्या है, प्लस कि आप मल्टीफैसेटेड हो जाते हो. सो व्हाट हैपेंस टिपिकली दैट लेट्स से अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था और IIM अहमदाबाद गया था, सो माय माइंड मोर और लेस वुड हैव बीन फिक्सेटेड ऑन NPV IRR. सो आई वुड नेवर हैव इमेजिन्ड कि ब्रांडिंग मार्केटिंग जो B2B या B2C होता है, या लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में जस्ट इन टाइम है या वेयर हाउस मैनेजमेंट है, हाउ क्रिटिकल इट कैन बी. कि देयर इज दिस बुलविप इफेक्ट इन डिमांड कि जहां पे छोटा सा क्राइसिस अगर एंड लेवल पे रिटेलर पे होता है तो इट लीड्स टू इन्वेंट्री शूटिंग अप एट डिफरेंट लेवल्स. तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में कहा किस कंपनी ने, नोकिया ने क्या गलती की और SBI का टर्न अराउंड कैसे हुआ, और यूको बैंक में क्या इश्यूज हुआ था, उसका इंडस्ट्रियल रिलेशंस में यूरेका क्या यूनिक फॉर्मूला अप्लाई करता है, और कोका कोला या मेट्रो. आई मीन द लर्निंग इज फिनोमिनल. सो दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ इट, that you will grow as an individual, because on the classroom what you learn is phenomenal. The third advantage is that you get to meet a lot of people who are better than you, so it leads to a lot of ego getting crashed, right? So मेरे economics exam में I had got 19 out of 20 and I had got a B positive grade. Did not get an A because there were 6 IITians in my class who would have aced it 20 on 20. अकाउंट्स का एग्जाम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, एक इंजीनियर टॉप करता है इवेंचुअली, विच इज क्वाइट एन हम्बलिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज एटलीस्ट आपको ये हो जाता है कि भाई मैं हूं जो वाला कहानी है वो काइंड ऑफ काफी हद तक कम हो जाता है. यू सी कि देयर आर पीपल बेटर देन मी एंड फाइन, आई एम ओके बीइंग व्हाट आई एम. आई डू नॉट हैव टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज आप बहुत ज्यादा गधा मजदूरी कर भी लोगे तो एक ही गोल्ड मेडलिस्ट होता है. बाकी जो मिस करते हैं दे रियलाइज कि भाई ठीक है, जिंदगी में गोल्ड मेडलिस्ट होना सबसे बड़ी बात नहीं है. So that's a lot of humbling experience when you meet professors. So for example, we had met Professor Ashish Nanda in our time. He was a gold medalist of IIT Delhi, gold medalist at IIM Ahmedabad, had then joined Tata Administrative Services, then went to Harvard Business School. Great career, came back to India as a director. When you talk to such people, met Professor Arvind Sahai, so he was like IIT Kanpur, then IIM Ahmedabad, then University of Texas, Austin, देन लंदन बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे. अब वो बंदा आपको इंडिया में आके मार्केटिंग पढ़ा रहा है. सो यू कैन इमेजिन कि व्हेन यू आर सराउंडेड बाय प्रोफेसर्स, मेरे पास इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते थे. नेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग लीड फ्रॉम PwC यूज्ड टू कम टू प्रोफेसर संजय टोलिया. ही यूज्ड टू कम एज अ विजिटिंग फैकल्टी एंड टीच अस ट्रांसफर प्राइसिंग. Similarly, someone who would have worked in SEBI for an entire lifetime comes and teaches you securitization laws. तो वो जो लर्निंग है, सो मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्लासेस में द एंड ऑफ द डे आई स्पोक टू माय प्रोफेसर एंड ही वाज लाइक ओके, यू नो सुरेश सेनापति. आई आस्क्ड हिम एंड ही सेड हां, विप्रो में ही यूज्ड टू रिपोर्ट टू मी. एंड लेट्स से प्रोफेसर समीर बरुआ, ही वाज ऑन द डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया. सो आप जिस टाइप के प्रोफेसर से मीट करते हो, जिस टाइप के आपके बैचमेट्स होते हैं, आप अलम से इंटरैक्ट करते हो, तो कोई एशिया पैसिफिक हेड है, कोई इंडिया का हेड है, तो उसका जो एडवांटेज भी हो जाता है ना. सो व्हाट हैपेंस इज कि यू मीट सम रैंडम गाय फ्रॉम एन FMCG कंपनी लेट्स से समवेयर, तो आप उसको फिर वो आपको नापता है ना इंसान जब आप नया आता है. तो वो आप अतुल भार्गव को जानते हैं, हाँ वो एशिया पैसिफिक हेड करते हैं. अच्छा, आप इसको जानते हैं, वो इंडिया हेड करता है. बोले हाँ, वो भी मेरा बैचमेट है, सीनियर है. और इसको जानते हैं, हाँ. एंड देन ही सेज ओके, he sees you eye to eye. He does not look down to you, he sees you eye to eye, probably looks up to you. So वो पेडिग्री का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है. You learn a lot from your batchmates, good things, bad things, grays, the whites and the blacks. तो उसमें क्या हो जाता है कि हाँ ठीक है, आपको समझ में आता है कि हाँ अगर कोई कमीना हो सकता है, किस अव्वल दर्जा का हो सकता है, कोई टेक्निकली अगर साउंड है, हार्ड वर्किंग है, वो कितना हार्ड वर्किंग हो सकता है. तो you know your limitations and you start enjoying that, right? And the fourth one is campus experience. I mean, हर किसी को एक B स्कूल में कैंपस एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए. I mean, there is no second thoughts about that because campus life transforms you as an individual. तो आपको कहीं स्टार्टअप में काम करना है या किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करना, when you stay on campus, you realize
the world around you. There are so many people. You'll have an APJ Abdul Kalam coming to you, a Shikha Sharma coming for an alumni reunion, a Harsha Bhogle just dropping in to say hi. तो आपको लगता है भाई क्या, और मैं तो अपने आप को बहुत तोप समझता था, मैं उतना तोप नहीं हूँ. प्ले फ्रिस्बी विद पीपल एंड देन देयर आर दिस बॉन्ड्स ऑफ लाइफ एंड दे आर लाइक, अच्छा मेरा फ्रेंड वो अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का वहाँ का लीड है, वो फ्रेंड वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हेड करता है. तो when you make friends with such people, तो I know in a world where we are in an overpopulated country, एक small segment में it helps, you know, that alumni network, the campus connect and all. So those are the things. जॉब छोड़ना, एक साल की सैलरी फोरगो करना, हाई कॉस्ट के बदले में आपको ये मिलता है. तो यू हैव टू नाउ डिसाइड कि आप एक लेवल पे जब लाइफ में पहुंच जाते हो तो व्हाट इज द नेक्स्ट financial goal you have. You want to buy a flat, a car, you want to go for a vacation abroad, or you want to invest in yourself. If you want to invest in yourself, a 1-year MBA is the right thing. But 1-year MBA will not work for everyone. So top 50 percentile or top 75 percentile के लिए बहुत अच्छा है. There will be some people with very unique background, like a design में background है, उसको campus में placement ही नहीं मिलेगा. या let's say you have got 15 to 20 years of work experience. Either you get a very good job on campus because you have a Bharti Airtel coming for a GM role, or you will find that no one wants to take you because एक typical Indian company का mindset है कि they will not recruit from campus at a mid management or a senior management level because अंदर वाले खार खा जाएंगे. सो देयर दैट चैलेंज. आप डोमेन शिफ्ट करने का कोशिश करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा इश्यूज है कि आप ट्रांसफर प्राइसिंग में आप 4-5 साल काम किए एंड इफ यू वांट कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चाहिए तो बंदा आपको फ्रेशर के रूप में भी नहीं ले पा रहा है, आपका एक्सपीरियंस उसके लिए रेलेवेंट भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक मिसमैच हो जाता है. सो पीपल हु डू वेरी वेल have got good experience. So there are people who I know who worked in FMCG companies, gone for this 1-year MBA and post this MBA have got into leadership positions in another FMCG. तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस को आप डिस्कार्ड करके रिबूट करना चाहते हैं अपना करियर, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट देन आप मान लीजिए आईटी में सर्विस डिलीवरी में थे, फ्रॉम देयर यू कैन मूव इनटू स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल arm of a big 4 consulting firm, an Accenture, very much possible. You were in data analytics and then you move into non-functional area into more leadership roles in an analytics firm, very much possible. So typically it is like that. If you can build up on your past strengths and then your 1-year experience, because आपका canvas तो काफी wide हो जाता है ना, your horizons are quite broad, and then I think it's a good thing. And if you want to start up, like it's crazily attractive proposition out there because आप सब कुछ समझ जाओगे एक बिजनेस चलाने में क्या होता है, सब कुछ उस क्लासरूम में आप पढ़ रहे हो. प्रोफेसर्स who seen it, done it, मतलब वहाँ पे theoretical professors वो नहीं है कि आपको डायग्राम्स बना के पढ़ाएंगे, आपको केसेस देंगे. they'll force you to think. When you come out, your thought processes are like something with the word values. You have got incubation centers on a B school which promote entrepreneurship. There are people who will willing to look at your startup for funding only because you got that IIM ka tag या ISB ka tag. All those things help. So friends, I've spoken different perspectives. For each, the journey will be unique because that luck factor is always there. Your competencies are also very different. So take a close and a concerted discussion with your near and dear ones and then come to this decision. Taking the GMAT is the first step and then going to the process. But when you go there wholeheartedly. There's a lot to learn out there. Thank you so much. All the best. Bye-bye.